plasma. Plasma is basically one of the basic constituent. Plasma is the main or the basic constituent, or you can say it's the medium of transport, right? It is one of the very important part of medium of transport, and it is one of the very important component of blood, or you can say the liquid portion of the blood is called as plasma. Liquid portion, or you can say the yellowish solution or the yellowish solution that is present in the blood, that is called as plasma. Actually, the color of the blood is because not because of the plasma. The color of the blood is because of the red blood cells, and in red blood cells because of the hemoglobin. Because hemoglobin is a pigment protein, right? Anas, can you tell me that what is the hemoglobin? What do you mean by hemoglobin? Ma'am, hemoglobin is a protein which uh, has an iron core. Okay. What kind of protein level it has? Ma'am, it has till 4. And what was that? Quaternary structure. Yes, Okay, ma'am. the name is not fourth level, it's the quaternary level. What is the difference between quaternary protein and the tertiary protein? Anas, what is the difference between quaternary जी protein and tertiary protein? मैम ये क्वार्टरनी प्रोटीन के अंदर वो बेसिकली आई थिंक 4 और स्ट्रक्चर्स वो एक साथ जॉइंट होते हैं और टर्शी के अंदर वो बेसिकली क्रम्पल्ड अप वो होता है मुझे एग्जैक्टली नहीं याद वेरी गुड। अब मुझे ये नजर आ रहा है कि हम लोग आगे तो जाए जा रहे हैं, लेकिन पीछे का भूलते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीकेंड पे फ्राइडे को आप लोगों ने अपना बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर प्लस सेल्स चैप्टर, ये दोनों चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, और इसकी रिवीजन करके आपने सारे टॉपिकल्स जो रहते भी हैं वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, प्लीज अपने होमवर्क को नोट डाउन करें, और जब मैं क्वेश्चंस करूंगी पिछले चैप्टर से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चंस आने चाहिए। वो इस वजह से बच्चे कि आपको पेपर में सारे क्वेश्चंस जो हैं वो लिंक्ड आने हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा ब्लड रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में से, व्हाई नॉट? ठीक है, तो वो चीजें जो लिंक्ड हैं डिफरेंट चैप्टर्स की, वो आपको भूलनी नहीं है। आपने अगर एक चैप्टर प्रिपेयर कर लिया है, तो उस चैप्टर की रिवीजन साथ साथ किया करें। कभी कभी ऐसे ही बुक निकाल के तो पिछला कोई चैप्टर पढ़ लिया करें, अनलेस आगे भागने का कोई फायदा नहीं होगा हमें। ठीक है ना? अभी आपको पता है ये चैप्टर आपका 2-3 दिन में, 4 दिन में खत्म हो जाएगा। तो फिर हम इसका मतलब है अगले चैप्टर पे पहुंच जाएंगे। तो आर टारगेट इज नॉट जस्ट फिनिशिंग द सिलेबस। ठीक है, हमारा टारगेट ये है कि जो भी चैप्टर्स हम कर रहे हैं वो आपने एक तो भूलने नहीं है, उनकी रिवीजन साथ साथ रखनी है। बिकॉज आपको पता है ए लेवल्स के पेपर्स आने में कोई इतना ज्यादा टाइम नहीं रह गया। ठीक है, सो प्लाज्मा, now let me tell you that what is hemoglobin. Hemoglobin is a quaternary protein that has got 4 polypeptide chains. How many? 4 polypeptide chains. And that's why it is called as quaternary protein. And with every polypeptide chain, hemoglobin has got a heme group with it, right? And that heme group basically a non-carbon, or you can say iron containing group, that actually binds to oxygen, right? And oxygen with it, and it is definitely the carrier of oxygen, right? So these things you should have in your mind whenever I'm asking you about the questions from the previous chapters, right? So this is the brief, you can say, introduction, or you can say the features of hemoglobin. Okay, we will talk about hemoglobin again in this chapter as well, but in a different direction. ठीक है, हमने डिफरेंट तरीके से इसमें हम अब पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर नहीं शायद पढ़ेंगे, उसका फंक्शन पढ़ेंगे कि हाउ इट कैरीज द ऑक्सीजन, हाउ इट बाइंड्स टू द ऑक्सीजन,
ठीक है, इस चीज को मेनली हमने इसमें फोकस करना है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. राइट, वी वर डूइंग द प्लाज्मा पोर्शन. ठीक है, प्लाज्मा बेसिकली क्या है? सोल्यूशन है. इसमें मैक्सिमम वाटर प्रेजेंट होता है एंड इट हैज गॉट मेनी डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस इन इट. राइट, इसमें बहुत सारे डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं. और वो डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं? इट कुड बी ग्लूकोज, इट कुड बी oxygen, it could be carbon dioxide as a waste product, it could be urea that is dissolved in it could be carotene that could be dissolved in it, or there are many other substances that are present in the dissolved form in the plasma, right? So it's the medium of transport. Not only the medium of transport, it also help in maintaining homeostasis, help in maintaining homeostatic activities perform करता है, maintaining the homeostatic activities, homeostasis. Now the question arises, how? Because you know that plasma has got water in it. So when the water potential increases or decreases in the plasma, that is basically maintained by the different processes. ठीक है, तो बेसिकली मेन जो हमारे बॉडी में वाटर कंटेंट है वो हमारे ब्लड का वाटर कंटेंट होता है, जिसको मेंटेन रखना जरूरी होता है. एंड दिस प्लाज्मा आल्सो हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस. हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस कैसे? कि ये जो सब्सटेंसेस हैं उनको लेके जाता है टुवर्ड्स द कैपिलरीज, एज आई टोल्ड यू इन द टॉपिक टिश्यू फ्लूइड. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करता है. जब ये प्लाज्मा जो है वो क्या बनाता है? टिश्यू फ्लूइड बनाता है. कैसे बनाता है टिश्यू फ्लूइड? वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, बट लेट मी गिव यू अ ब्रीफ डिटेल that when the blood reaches to the capillary, let's suppose this is a blood capillary, right? The blood plasma, ठीक है, प्लाज्मा दैट इज ट्रेवलिंग इन द ब्लड कैपिलरी, इट लीक्स आउट फ्रॉम द कैपिलरी गैप्स. जब ये लीक आउट करता है तो इस लीकिंग की वजह से जब ये आपके सराउंडिंग्स ऑफ द टिश्यूज में आ जाता है, राइट? सो व्हेन दिस ब्लड प्लाज्मा लीक्स आउट and it comes or it becomes a part of the tissues. These are the tissues, or you can say the cells present in the surrounding of the blood capillary, right, where it is supplying blood, or you can say oxygen containing, nutrient containing blood, right? तो plasma leak out करता है. Red blood cells, large proteins, they stay back in the blood capillary. Remember जब हमने टिश्यू फ्लूइड का किया था? और ये एट्रियल कैपिलरी बेड पे बेसिकली ये प्रोसेस होता है. डू यू रिमेम्बर दिस? एंड दिस प्लाज्मा लीक्स आउट from the capillary because of the higher hydrostatic pressure, if you remember. ठीक है, अब जब ये प्लाज्मा बाहर आ जाता है, now this plasma is no more called as plasma, it will be called as tissue fluid. So this is how the tissue fluid is formed, and this tissue fluid is very important, and its composition needs to be maintained around the tissue so that it can help in exchange of gases, exchange of nutrients. क्योंकि जब ये टिश्यू फ्लूइड प्लाज्मा से बाहर आता है तो इसमें ऑक्सीजन भी होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं. They diffuse into the cells because cells need them, and then the tissue fluid take up carbon dioxide from the respiring tissues, and then this tissue fluid sometimes goes back into the capillary or may enter into the lymphatic cells. So this all exchange of substances is done by the liquid part of the blood, and that is called as plasma. Okay, other than plasma we also have got this, more components in the blood. There can be platelets in the blood. Platelets क्या होते हैं? Do you have any idea, Anas? What are platelets? Any Ma'am, clue? platelets are fragments of cells which can be stimulated to form a fibrin net uh, Fibrous through protein, very good. fibrinogen. And they, from the fibrinogen, they convert fibrinogen into fibrin, Fibrinogen to fibrin. right? Because they participate in making clots, right? And जी. whenever there is a wound in the body, right, or there is some damage in the body, these platelets basically trigger some enzymes to activate other enzymes so that the fibrinogen, that is the soluble protein in the blood,
can be converted into non-soluble protein, that is a fibrous protein in the blood, and that helps in making clots. So we can say जी. platelets are the cell fragments, and they help in clot formation, not dot formation, it's clot formation. In clot, फिर वही मैंने लिख दिया है, CLO, clot formation, right? Acha, or there is a proper cascade of reaction that starts when there is some damage to the skin that is happening. Okay, and then what happens when there is a damage to the skin? The blood plasma again comes out from the skin, and then the platelets basically trigger those damaged cells present in the skin to release an enzyme or to activate an enzyme called thrombokinase. ठीक है, ये आपने IGCSE में भी पढ़ा था कि थ्रोम्बोकाइनेज फिर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, एंड देन दैट थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन. सो फिब्रिन इज बेसिकली fibrinogen is a soluble protein. मैम इट्स अ प्लाज्मा प्रोटीन. Yes, it's a soluble plasma protein, and fibrin, when it converts into fibrin, this is the fibrous protein. And this fibrous protein basically have a thread-like structure, and in between these thread-like structures, the red blood cells when get stuck, right? When the red blood cells get stuck, it forms clot. So this whole process is started by platelets. Are you all getting me? Adil, any question? No, ma'am. Okay. So, plasma helps in exchange of substances. Plasma helps to transport different substances. It could be waste products, it could be hormones, it could be antibodies, it could be any substance that can be present in the blood. ठीक है, तो ये आपका blood का composition है. Now we are starting with uh, another component of the blood that is related to red blood cells. Red blood cells हमने कल पढ़े थे डिटेल में, that they are the cells that are donut shaped or they are biconcave shaped, right? And they have got hemoglobin in it, right? What is hemoglobin? Again, we are talking about hemoglobin and its role in the oxygen carrying capacity. How it carries oxygen in the blood, right? Hemoglobin has four polypeptide chains, as I just told you that, and those all, for example, this is one polypeptide chain, this is the other polypeptide chain, and such four polypeptide chains are present. And with every polypeptide chain, there is a heme group attached. There is a heme group attached, right? And with every heme group, there can be one oxygen molecule that can be carried. So I can say with every heme group, there will be one oxygen that will be carried. So total, altogether, four molecules of oxygen will be carried by the hemoglobin. But question arises that how oxygen binds itself to the hemoglobin, राइट? अब ये कहाँ होता है और ये कब होता है? Actually, we all know that hemoglobin, the oxygen is one of the gas that we inhale in when we inhale in air. ठीक है, और एयर को इनहेल करने के बाद वो एयर कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है. So we can say that oxygen's higher partial pressure, oxygen oxygen's higher pressure, partial pressure is present in the lungs. और lungs में भी जो alveoli होते हैं, if you remember, ठीक है, we have talked about them in the previous classes as well, that alveoli basically are the cavities, or you can say the air spaces, right? There is not only one airspace present, there are many airspaces present. ठीक है, और जब blood इस airspace की surrounding में आता है with red blood cells and the waste products, because this blood that is being supplied to the lungs, that blood is not oxygenated, that blood is deoxygenated blood, right? That is not rich in oxygen. तो जब हम inhale in करते हैं air that has got higher partial pressure, and the deoxygenated blood has got low partial pressure of oxygen, right? So what will happen, that the oxygen will diffuse from this alveoli into the red blood cell. ठीक है, so this process is called as diffusion.
So once it diffuses into the blood, it reaches to the red blood cells and then it passes the red blood cells membrane as well. So to pass to the blood vessel, it has how many membranes it has to pass? This is the lining of the alveoli, and these are the cells of alveoli, let's suppose, right? This one. And then this is the capillary wall, and capillary wall, that also has got one celled thickness, right? And here there is oxygen present in the alveolar cavity. I'm making this simplified diagram. Now this oxygen molecule first crosses one first membrane, second membrane, then third membrane, then fourth membrane, and then it reaches to the red blood cells. And then it passes through the fifth membrane. So altogether it has to pass through five membranes to reach to the हीमोग्लोबिन. ठीक है, क्योंकि आपको पता है हीमोग्लोबिन तो यहाँ प्रेजेंट है रेड ब्लड सेल्स में. दिस इज रेड ब्लड सेल दैट कंटेन्स हीमोग्लोबिन इन इट. तो हीमोग्लोबिन तक पहुंचने के लिए इट हैज टू पास थ्रू द फाइव मेम्ब्रेन्स. ठीक है. और किस तरह पहुंचता है, क्यों जाती है ऑक्सीजन एल्वेलर कैविटी से इनटू द ब्लड? बिकॉज ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इन द लंग्स. ठीक है. और लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होता है और सराउंडिंग ब्लड में पार्शियल प्रेशर कम होता है. दैट्स व्हाई ऑक्सीजन ऑलवेज डिफ्यूजेस फ्रॉम द एल्वेलाई इनटू द ब्लड. आर यू ऑल गेटिंग मी? कोई क्वेश्चन? No, ma'am. Okay, very good. And it is said that when there is higher partial pressure of oxygen in the lungs, तो हम क्या theoretically अगर हम इस चीज को प्रूव करना चाहें through an experiment, we can do that as well. ठीक है. और theoretically it is said that when there is higher partial pressure of oxygen, let's suppose I'm just giving you the results of that experiment, that it is observed and it is found by the scientists that if we keep increasing the oxygen's partial pressure, right, the hemoglobin hemoglobin saturation will start taking place. What do saturation with? Oxygen, not with anything else. Saturation with oxygen will start taking place. As we increase the partial pressure of oxygen, it will also increase. So you keep on increasing the partial pressure, right? Like this, 9, 10, 11, and so on. So on the because of the higher partial pressure of oxygen, the hemoglobin saturation will keep on increasing. And then at one point, it will become constant, right? What the question arises that what do we mean by hemoglobin saturation, मैम? ठीक है. हीमोग्लोबिन सैचुरेशन का मतलब ये है जनाब कि आपके पास चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स में हीमोग्लोबिन की चार हीम ग्रुप्स हैं. ठीक है. आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग दीज हीम ग्रुप्स विद दिस कलर. ठीक है. ये हीम ग्रुप है, ये हीम ग्रुप है, ये हीम ग्रुप है और ये हीम ग्रुप है. ठीक है. अब हीमोग्लोबिन सैचुरेशन का मतलब ये है कि इफ देर इज हायर ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर दैट इज प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग, दिस ऑक्सीजन विल बाइंड टू द हीम ग्रुप वन बाय वन. ठीक है. अब होता क्या है, कैसे ये बाइंड होती है और कैसे जो चारों हीम ग्रुप्स हैं वो बाइंड करते हैं विद द ऑक्सीजन? दैट इज बेसिकली थ्रू कोऑपरेटिव बाइंडिंग. ठीक है. कोऑपरेटिव बाइंडिंग हम किसको बोलते हैं? ठीक है. कोऑपरेटिव बाइंडिंग ये होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता होता है कि हाउ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन इज अचीव्ड. सबसे पहला फैक्टर हीमोग्लोबिन सैचुरेशन को अचीव करने का ये है दैट द ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर हैज टू बी हाई. ठीक है. ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इसकी सराउंडिंग में ज्यादा होना चाहिए. इसका मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन सैचुरेशन कहाँ अचीव होती है? लंग्स की सराउंडिंग ब्लड में. ठीक है. क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मैक्सिमम होता है या हाई होता है. ठीक है. और उसके सराउंडिंग में ये जो ब्लड है, ठीक है, इन द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, जहां पर रेड ब्लड सेल्स में ये हीमोग्लोबिन मौजूद है, सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन सैचुरेशन यहाँ अचीव हो. राइट. सो when there is higher partial pressure of oxygen in the alveoli and in the surrounding blood of the alveoli, there is low partial pressure of oxygen. So oxygen will bind to the hemoglobin one by one. And that attachment is basically
called as cooperative binding. Now, how can we describe and explain cooperative binding? Cooperative binding का मतलब ये है कि when one oxygen molecule binds with one heme group like this, right, it causes a distortion, it causes a shape change, you can say, in the hemoglobin molecule, sorry, the red blood cells hemoglobin polypeptide chains, ठीक है। अब पहला ऑक्सीजन जब बाइंड करता है तो इसमें एक डिस्टॉर्शन आती है, एक शेप में चेंज आता है। अब वो शेप चेंज क्या बेसिकली कॉज कर रहा होता है कि जो आपका ये है सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन है वो एक्सपोज हो जाए, और जब वो एक्सपोज हो जाता है तो फिर और ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड करती है, जिसकी वजह से फर्दर डिस्टॉर्शन आती है, फर्दर शेप में चेंज आता है, सो दैट द थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैन बाइंड टू द हीम ग्रुप, एंड दैट causes the distortion to bind to cause the exposure of the fourth hemoglobin molecule, that causes the oxygen to bind to the fourth molecule as well. Are you all getting me? Any question? नो कोई मैम। चीज नहीं। दिस कोऑपरेटिव बाइंडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सो हाउ द hemoglobin saturation is taking place? Hemoglobin saturation takes place where there is higher partial pressure of oxygen through cooperative binding. And how cooperative binding takes place? Very important. Anas, how cooperative binding is taking place? हेलो, बेटा मैम जरा ये नहीं जल्दी पता। बताएं, टाइम थोड़ा है। अभी बताया है मैंने, वेयर वर यू? मैम मैं यहाँ पे था, मुझे इसी तरह समझ नहीं आई। ओके, तो आपने पूछा क्यों नहीं कि मैम जरा दोबारा रिपीट कर दें? जब मैंने कहा है कि ये समझ आया है सबको तो आप खामोश रहे हैं। बेटे मैं आपसे मैम दूर जरूर हूँ, लेकिन ऑल्दो आई कांट सी यू, या तो फिर मुझे बताएं, मैं कैमरास ऑन करवाऊं ताकि मैं सबकी शक्लें भी देखूं साथ साथ और जैसे मुझे क्लास में अंदाजा हो जाता है कि किसको समझ आया है किसको नहीं आया, तो मुझे यहाँ भी हो जाएगा अंदाजा थोड़ा सा। अलीजे, आपको समझ आया है बेटा? मैम रिपीट कर दें। हाँ, तो जब मैं पूछती हूँ ना क्वेश्चन कि ये समझ आया है कि नहीं, तो जरूर कहा करें मैम, रिपीट करें, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो मुझे नहीं नजर आ रहा, वरना क्लास में तो मैं ऐसे डिटेक्ट कर लेती हूँ, आंखों से ही, आंखें देख के ही पता लग जाता है कि ये इसको समझ आया और इसको नहीं समझ आया। चले जी, आई एम रिपीटिंग इट। हीमोग्लोबिन saturation is achieved where there is higher oxygen's partial pressure, और वो आपको पता है हमारे पूरी बॉडी में लंग्स में होता है, क्योंकि हम जब इनहेल करते हैं एयर तो वो लंग्स में जाती है। अब जहां ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वहां हीमोग्लोबिन सैचुरेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ कोऑपरेटिव बाइंडिंग, and this cooperative binding actually happens by uh, uh, binding of oxygen molecule with one heme group, ठीक है। जैसे ही एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड्स टू द फर्स्ट हीम ग्रुप, it causes a shape change in the hemoglobin molecule that causes polypeptide chains, ठीक है, that causes the exposure of the second heme group so that it can bind to the second molecule of oxygen, and that second molecule when binds to the heme group, definitely it causes the distortion again। अब ये चेंज होता है ना शेप में, एकदम से सारे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर जाते, वन बाय वन करते हैं। जैसे मैंने कहा कि इस बाइंडिंग को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कॉपरेटिव बाइंडिंग, कि वो कॉपरेट करते हैं एक दूसरे के, एक दूसरे को एक्सपोज करते हैं, और एक्सपोज करके हीमोग्लोबिन को की सैचुरेशन अचीव होती है, ठीक है। सो पहला मॉलिक्यूल अटैच होता है, डिस्टॉर्शन होती है, जिसकी वजह से दूसरा अटैच हो जाता है, दूसरा अटैच होता है, फिर डिस्टॉर्शन होती है, सो दैट द थर्ड मॉलिक्यूल कैन बाइंड टू द हीम ग्रुप, एंड देन